My name is Sophia Pandey. I'm a poet, writer, healer, and filmmaker living in the States for over 20 years. I was born in the coastal city of Karachi, not far from these windswept deserts, and I have journeyed from California to Pakistan for the rare opportunity to make a very special pilgrimage. As a writer, the myth of the goddess Sati has always fascinated me. Hers is the story that begets all stories, the birth of language itself. Sati was the first personification of the great goddess, mother of the universe, and its prime moving force, or Shakti. She took human form in order to marry the great god Shiva, on the condition that she would give up her earthly body if she was ever disrespected. When her father Daksha insulted her, Sati immolated herself. When Shiva learned of her death, he flew across the heavens carrying Sati's lifeless body in his arms and began destroying all of creation in a wild dance of grief and rage. In order to save the world, the preserver god, Vishnu, dismembered Sati's body limb by limb with his flying disc weapon. 51 pieces of the goddess's body fell to earth in India, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, and Pakistan. Each limb of the goddess gave birth to a letter of the Sanskrit alphabet. The 51 sites became known as Shakti Peeth, or sites of sacred power, particularly for tantrics, who believe that each site holds the key to a specific supernatural ability or siddhi. The crown of Sati's head, or Brahmarandra, fell in Pakistan in a remote area of Balochistan. Here the goddess is known as Hinglaj, and the area, named after her, is known as Hinglaj. Hingle is an alchemical medicinal compound that represents the union of Mercury, the essence of Shiva, with sulfur, the essence of Shakti. The goddess Hinglaj is thus believed to possess healing powers that can cure snakebite, poisoning, and other diseases. It is this ancient and sacred site that I have journeyed from America to make pilgrimage to. Hinglaj Shakti Peeth is located deep within Hinglaj National Park, which at 6,200 square kilometers is the largest park in Pakistan. Tranquil turquoise waters of the Hinglaj River run through the park. The river is famous for its crocodiles and for the legend that it will never run dry. In its flooded state, everything that you see here would be covered by water. However, it's winter now, and the water is at a very low level. Fortunately for us, as the only way to reach the shrine is for us to cross the river in our car, and it's by no means certain that we will make it.
After crossing the river Hinglaj and hiking over treacherous rocks, we have finally reached Hinglaj. The Shakti Peeth is nestled in a small cave at the side of the cliff. Hinglaj is revered by local Balochi tribes, who call it Nani Mandir. In Urdu, Nani means maternal grandmother, a name which is related to the ancient goddess Nanaya, who was known in Persia as Anahita and in Sumeria as Inanna. In ancient times, there was no man-made temple here, only the natural form of the goddess. But since then, a modest temple has been erected around the cave, which is locked, and there is no sign of a priest, or anyone for that matter. And I wonder, as I admire the magnificence around me, if I will have to go back to California without the darshan of Hinglaj Devi. Miracles can happen, I tell myself. And sure enough, after a while, a figure appears in the distance. महाराज हूँ इधर का, पूजा वूजा कराता हूँ जिसको। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है महाराज गोपालगिरी। अच्छा। जी हाँ, तो मुझे 2 साल हो गए मैं इधर रहता हूँ। अच्छा जी हाँ। वैसे महाराज, इन देवी जी का यात्रा कब होता है? ये है 22 अप्रैल को। अच्छा। 22 अप्रैल को बड़ी यात्रा होती है, जिस तरह हज होता है हाँ, ना, ये हमारा हज है। वो तो है। 22 अप्रैल को हज ही होता है इधर। तो ये हिंगलाज तो सती माता थी। हाँ, ये सती माता थी, शिव की पत्नी जी, जो इनके अंग थे। तो यहाँ उनका सिर गिरा था। जी जी हाँ। ये तो बहुत पुराणों में, हाँ, पुराणों में लिखा हुआ है ना। पुराणों के हिसाब से तो हम 2 लाख साल भी आपको कहते कहते डरते हैं, कहीं आप यकीन न करें हम पर। ये होता है ना, हर कोई तारीख दान नहीं होता है, जिसको तारीख को मालूम नहीं होता है ना। अब उसको 2 लाख साल बोलो तो वो बोलेगा यार ये हमारा झूठ बोलता है। लेकिन हर एक को तो हम इतना नहीं बता सकते सही तरीके से। हाँ, क्योंकि वो जो चाहत रखते हैं हिस्ट्री के अंदर चाहत रखते हैं, तो उनको तो हम बता देते हैं। बाकी जो ऐसे ही पूछते हैं तो उनको क्या बताएं। सही बात है। जब उनका उनसे वास्ता ही नहीं रहता है, बस बात करना है।
अच्छा, यहाँ कितने यात्री आते हैं तकरीबन? ये तकरीबन लाख के करीब हो जाते हैं और लाख के ज्यादा करीब। होंगे, पूरी दुनिया से आते हैं। यहाँ से निकली लेकिन हुई ये मूर्तियां खुद बनी हैं, ऑटोमेटिकली खुद बनी है? खुद बनी है, माता ने खुद बना के अंदर बैठ गए, अच्छा, मूर्ति में समा गई। तो ये हिंगलाज माता के बारे में हमें कुछ बताएं। हिंगलाज माता जो थी ना, वो बात ये थी कि 2 लाख साल के करीब, बहुत पुरानी बात है कि इधर एक हिंगोल बादशाह रहता था। हाँ, उसकी कौम का नाम था हिंगोली। अच्छा, हिंगोली। अभी ये इधर से चली गई, कोई हो गया होगा, ये जिलजिले भी आते हैं यहाँ, ऐसी परेशानियां, तो चली गई है रूस के तरफ। उधर उन लोगों ने कहलाया मंगोली। अच्छा, मंगोली। तो हिंगोली कौम का जो बादशाह था ना, वो बड़ा जालिम था। अपनी राय पर जुल्म करना, ऐश याश करना, प्रजा की हालत सेट नहीं करना, कोई अच्छी औरत देखता उसको उठा के लेके जाना, ये गैर शादीशुदा लड़कियों को उठा के लेके जाना, ये इनके फितरत में था। ये तो आजकल के हुक्मरानों जैसा है। हाँ, वो ऐसा ही हो गया बादशाह। तो अच्छा। क्या था कि एक मर्तबा ये जो इधर के पुजारी थे, वो माता भवानी की पूजा करते थे, नाम था माता भवानी। अच्छा, तो एक मर्तबा माता भवानी जो है वो 7 आसमान से नीचे उतरी, आई बादशाह के बाग के अंदर, एक हूर का रूप धारण करके, यानी इंसान रूपी था। हाँ। 2 बाजू वाले, ऐसे उसके 8 बाजू हैं लेकिन 2 बाजू वाले बनकर आई थी। इतनी हसीन थी कि बादशाह देखता ही दंग रह गया, उसके पीछे हो गया, उसके हवासी गुम हो गए। फिर उसको घुमाती घुमाती उसको इधर लेके आई। ये गुफा थी, ये पहाड़ जो है ना बहुत आगे थे, इधर अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं थी। हाँ, सूरज की किरण नहीं जाती थी। अच्छा, फिर इधर आई तो इधर माँ, पहले उधर जो काली का मंदिर है ना, हाँ। उधर काल रूप, ऐसा ही रूप धारण करके खड़ी हो गई। बादशाह ने देखा, बादशाह डरने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने रूप चेंज कर दिया। अच्छा, वही हुर्क वाला रूप दिखाया उसको। फिर वो इधर से होते इधर आई, ऐसे लेट गई, जिस तरह ये लेटी हुई है ना, हाँ। ऐसे लेट गई। बादशाह जैसे आया तो उसने देखा ये तो पत्थर की मूर्ति है। वो गई कहाँ? फिर उधर गया, उधर से वापस आया तो इसमें से माँ प्रगट हुई, बाहर आई। अच्छा, रूहानी तरीके से बाहर आई, हाथ में तलवारें थी, आंखें लाल थी। बादशाह तो समझ गया मेरा मौत तो यकीनी है। तो उसने कहा कि मैंने जो भी गुनाह किए हैं बख्श करो। उसने कहा हम बख्श नहीं करते। तुमने बच्चियों की इज्जत लूटी, औरतों की इज्जत लूटी, प्रजा को तकलीफ दी है, हम कैसे बख्श कर सकते हैं? और कुछ मांग जिंदगी के सिवा। तो उसने कहा कि माँ आप इस मूर्ति के अंदर चेतनात रहें, जो भी आए उनकी मन की मुरादें पूरी रहें, और ये हमारे इलाका जो है वो हिंगलाज के नाम से मशहूर हो और इधर हज का मुकाम हो जाए। अच्छा, हाँ, तो फिर ये हमारे बड़े में बड़ी यात्रा है दुनिया की। तो यहाँ पे मैं बहुत मंदिरों में गई हूँ, लेकिन यहाँ पहली दफा मैंने देखा है कि ये माता की चूड़ियां लगी हुई हैं त्रिशूल में। ये बहुत अच्छी लग रही है। आप पहने तो दें, पहनेंगे। एक कुछ प्रसाद तो मिलना चाहिए प्रसाद महाराज। बहुत देंगे, एक कुछ क्यों, काफी देंगे आपको। लो बेटा, ये माँ का प्रसाद। Jai Ho, Shukriya. For me, it is as if the great mystery of the goddess was reborn as the letters of the alphabet, as language. And it is in language, in our unique and mysterious impulse to create poems and stories and narrative, that the goddess lives in each one of us. We have to leave soon if we are to return to Karachi by nightfall. So I take one last look at Hinglaj, as if to burn each sacred stone into memory. But in my heart of hearts, I know that one day I will return.